वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे है: सपोज एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए। If limit x approaches to a, f of x is equal to L, and limit x approaches to a, g of x is equal to L, then limit x approaches to a, h of x is equal to L. मीन्स कि अगर आपके पास तीन फंक्शंस हों f of x, h of x and g of x such that f of x is less than or equal to h of x less than or equal to g of x, और ये जो एंड वाले दो फंक्शंस हैं f of x एंड जी ऑफ एक्स, अगर इन दोनों की लिमिट पॉइंट एल हो तो ये जो बीच का फंक्शन है इसकी लिमिट भी पॉइंट एल को ही अप्रोच करेगी। सो ग्राफिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसी तरीके से एक एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। क्लियरली एच ऑफ एक्स का ग्राफ जो है ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में लाई कर रहा है। जो पॉइंट ए के ऊपर जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट अगर पॉइंट एल है तो एच ऑफ एक्स की लिमिट भी क्लियरली पॉइंट एल को ही अप्रोच करेगी। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो है वो चंद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सैंडविच थ्योरम टू वेरीफाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ एक्स बाई x4 प्लस 4x2 प्लस 7 अंडर द रूट। अब स्टूडेंट इसके सोल्यूशन में as we know that mod of x is greater than or equal to, mod always जो है वो greater than or equal to 0 होता है किसी भी नंबर का। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 is less than or equal to mod of x। also अब स्टूडेंट ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, और इसको अगर हम x4 प्लस 4x2 प्लस 7 अंडर द रूट। अब ये वैल्यूज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होगी, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स मॉड लेस देन और इक्वल टू x4 प्लस 4x2 प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट ये तीन फंक्शन हमारे पास बन गए, एक 0, ये सेकंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द मॉड ऑफ एक्स बाई x4 प्लस 4x2 प्लस 7 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वेयर f of x is equal to 0, h of x is equal to mod of x by x4 plus 4x2 plus 7 under the root, and g of x is equal to mod of x। as limit x approaches to 0, f of x ये तो 0 के इक्वल ही आएगा, एंड लिमिट x approaches to 0, g of x ये इसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 mod of x ये भी इक्वल टू 0 आएगा। सो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट इक्वल टू 0 है। सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम एच ऑफ एक्स की लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी। सो
by sandwich theorem or squeeze theorem. Sandwich theorem. Limit x approaches to 0, h of x is equal to 0, that is limit x approaches to 0 mod of x upon x4 plus 4x square plus 7 under the root is equal to 0. अब स्टूडेंट इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0. अब इसको भी हम इस लिमिट को भी बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम हम इसको प्रूव करते हैं. सो as we know that minus 1 is less than or equal to sin t less than or equal to 1. कि साइन हो या कॉस वाला फंक्शन हो, इन दोनों की जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में ही रहती है. सो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1. सो ठीक लगेगा 1/x वैल्यू अगर हम ले लें तो उसके लिए भी ये रिजल्ट जो है ये ट्रू होगा. अब स्टूडेंट में नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि x मॉड से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू x जो है x से मल्टीप्लाई कर दिया है. और नाउ यहाँ पे ये हमारा f ऑफ x फंक्शन है, ये h ऑफ x फंक्शन है और ये g ऑफ x फंक्शन है. लेट f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स g ऑफ x इज इक्वल टू, या सेकंड h ऑफ x ले लेते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x and g of x is equal to x, which implies f of x is less than or equal to h of x less than or equal to g of x. Also limit x approaches to 0 f of x equal to limit x approaches to 0. f of x की वैल्यू -x है तो ये लिमिट 0 की इक्वल आएगी. एंड लिमिट x approaches to 0 g of x is equal to limit x approaches to 0. g of x means x and this limit is equal to 0. So f of x and g of x की लिमिट 0 है. सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम h of x की लिमिट भी क्या होगी, 0 के इक्वल ही होगी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, which implies but now by using by sandwich theorem or squeeze theorem, sandwich theorem, limit x approaches to 0 h of x
is equal to 0. That is, limit x approaches to 0, x sin 1 upon x is equal to 0. और ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना है।